No, please, please. Ma'am. Please. Ma'am. Please. Ma'am. Please. Ma'am, put your hands behind your back. Please. Ma'am, put your hands behind your back. Don't take this off I got because to we're pat Muslim. No, don't. I'm gonna pat you down. I'll put it back on. I'm dying. No, you're outside 181. She's in the transport. Can give me a ticket for that and take Well, this gonna be your ticket too. how This your much? ticket. How much this? It's 500. Huh? 500. I have. No, we can't take your money. Huh. No, 500. no. So this one I would give. You have to go to the Dunwoody Police Department. अमेरिका में भारत की ये महिला चोरी करते हुए पकड़ी गई। पिछले दिनों एक हिंदू महिला चोरी करते हुए पकड़ी थी जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, बहुत गंदी गालियां दे रही थी और ये मुस्लिम महिला है। यानी इससे ये तो है कि जो चोर है, जो बदमाश है, उसका यानी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका कर्म है वो गंदा है, वो इंसान गंदा है, वो धर्म और जाति वो गंदे नहीं हैं। तो ये मुस्लिम महिला चोरी करते हुए पकड़ी गई है और बड़ी बात इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगी कि ये महिला रिश्वत देने की कोशिश कर रही है पुलिस वालों को, मतलब अपनी डायमंड की रिंग देने की कोशिश कर रही है। जैसे इंडिया में आप पुलिस वालों को रिश्वत देके कितनी वीडियो देखते हैं कि रिश्वत देके आपको ट्रैफिक आपने रूल तोड़ दिया, 500 का नोट, 1000 का नोट देके आप छूट जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं चलेगा भैया। और एक सोचने की बात है, यानी आप अमेरिका में जा रहे हो तो आपका कितना अच्छा स्टेटस है, आपका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया रहा होगा, आपकी 4-5 देशों की ट्रैवल हिस्ट्री होगी, आपका कोई मजबूत रिश्तेदार होगा, स्पॉन्सर किया तब जाके आपका वीजा लगा है, लेकिन फिर भी आप वहां जाके छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखो, मतलब माथा पकड़ लोगे आखिर तक इस महिला की हरकतों को देखकर। यह घटना 2023 की है, लेकिन अमेरिका पुलिस ने इसका वीडियो अब रिलीज किया है। अपने कमेंट्स करके आप बताते रहना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब देखते हैं पूरी वीडियो। On May 11th, 2023, Dunwoody police responded to a shoplifting incident at Von Moore in Perimeter Mall in Dunwoody, Georgia. Okay. Hey, you guys are pressing charges. Did you want to see anything? Yes. ये जो वारदात हुई है, घटना हुई है, ये जॉर्जिया में है। जॉर्जिया के एक स्टोर में इस मुस्लिम महिला को चोरी करते हुए पकड़ा गया है। It's about 20 minutes of her shopping. So she's been in here for 20 minutes doing it? That's how long we observed her. Yeah, we have video over about 20 minutes video. Matt, if you want to play it in fast forward. Yeah, I'm just trying to see if I can locate her in the video. Pull stuff off hangers. See, and then I got those are off hangers. She wraps them around. I'll show you the other concealment that I got in a minute here, so I get to that point. We're kind of still watching her. We watched her all the way till she came out and exited. We went and checked the fitting rooms. Found out the fitting rooms were, just the way we left them. There was a hanger that was an empty hanger that was in the dressing room, and that's when we got to go ahead to go make the stop. The officer went to question the suspect, unaware the real drama was about to unfold. पुलिस है ना यहाँ स्टोर के जो रूम है, इस रूम में एक बार कंप्यूटर को देख रही है, जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है कि इस महिला ने कैसे कैसे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक हैंगर से ये महिला हैंगर उतारती है जिसमें कपड़े टंगे हुए थे, और जो ट्रायल रूम होता है, चेंज रूम, वहाँ जाती है और वहाँ से वो सारे कपड़े हैंगर से उतार के एक बैग में रख लेती है और हैंगर को वहाँ छोड़ देती है। तो 20 मिनट तक ये महिला कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, और इसकी हरकतों पर संदेह हो जाता है और बगैर बिलिंग किए ये बाहर निकलने लग जाती है। तब इसको पकड़ लिया जाता है कि बिलिंग की नहीं और आपने यहां से सामान उठा लिया। तो इस तरह ये पकड़ी गई है बगैर बिलिंग किए और कपड़े लेके, और ये बाहर निकली। I'm finished with her. I mean, I just got to get our number, but you could. Say it again. I said I'm done with whatever. I'm done with it. Okay. Kindly Do you have don't a, do this for Yeah, me. you have to. you have a dollar amount or? Yeah. Dollars, I'm buying this all stuff. अब जब पकड़ी गई ना, तब ये कह रही है कि मैं सारा सामान खरीद लूंगी और मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। I'm buying all this stuff. You buying all this stuff? Yeah. Kindly don't do this. Ma'am, do you have ID? I don't have. You don't have any identification? No? No. पुलिस कह रहा है कि आपके पास कोई आईडी है, ये कह रहा है मेरे पास कोई आईडी नहीं है। Ma'am, can you write down your information for me? Listen. Kindly don't do this. But you were saying here don't do this. I'm again, buying all stuff. So please. We prosecute 100%. Von Mar, अब we बार बार कह रही prosecute है कि सर मैं इसको 100%. खरीद लूंगी। Our policy is to prosecute everybody that shoplift in the store. But I'm buying all these things. Yeah, we can't. Please. So sorry for that. Yes, sir. Are you from Georgia? I don't know.
Where are you from? India. पुलिस पूछ रही है कि क्या आप जॉर्जिया से हो? ये कह रही है नहीं, जॉर्जिया से नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ। अब ये कह रही है कि मैं ये सारा सामान खरीद लूँगी, मैं इसकी पेमेंट कर दूँगी, लेकिन अमेरिका का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि आप एक बार पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई है वो होगी, फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। Do you have a license out of Georgia or anything? I don't live here. You don't live here? Yeah. You're visiting? Yeah. Where are you staying? Dunwoody. My relatives. So you have no identification. I told him my passport number. What's your passport number? ये जॉर्जिया में किसी रिश्तेदार के पास घूमने के लिए आई है और फिर ये बाज़ार में आ गई और आके इसने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। यार ये तो सोच ले, तू चोरी कर रही है और पकड़ी गई तो तेरा रिश्तेदार के ऊपर क्या रहेगी? तेरी पूरी जो परिवार है, रिश्तेदार है, कुनबा, वो पूरे उसमें फैलेगी। क्या मैसेज आएगा? मतलब कुछ नहीं सोचा। और मतलब इसके ड्रेस से तो लग रही है कि ये ठीक ठाक घर की महिला, अच्छी खासी इनकम इसके परिवार की रही होगी और फिर ऐसी वारदात को अंजाम दे रही है ये। You didn't give me a favor. You were saying relax and relax. I want to buy everything. Yeah, but Von Maur don't allow you to pay for it once you shoplift. Can't you go Mumbai? Let me go now. ये महिला ना इंडिया में मुंबई से है और ये पूछ रही है कि क्या मैं अब मुंबई वापस जा सकती हूँ? No. Sir, what you do then? अब ये जैसे पुलिस वाले से पूछताछ कर रहे हैं कि आप क्या करोगे मेरे साथ, ये पूछ रही है। I'll explain everything to you in a second. Just give me. Can you take a penalty of this, sir? ये कह रही है पेनल्टी ले लो सर, मुझे छोड़ दो प्लीज। I can't tell exactly what they are though. Oh, they're the items. These are right here. Okay. So this shirt right here. This looks like a dress or some kind of a dress top. One checker. Pair of pants. And these three fragrances here. I got Gucci. Oh, go ahead. Gucci. Cancel 31 and 26 on This there. is Issey Miyake. Look at that. Spell that. ISSEYMIYAKE is Paco. RABANNE. इसने चुराए हैं, कपड़े चुराए हैं, पेंट चुराई है, गुसी चुराई है और जो सेंट है वो चुरा है, यानी हजारों का सामान है, हजारों डॉलर का। And then you're saying you're visiting from India? Yeah. How long have you been here? 2 weeks. 2 weeks? I was in Phoenix and now I don't want to tell my relatives because this is very shameful. You were where? With my relative, I don't want to tell them. That's why, पहले ये महिला फिनिक्स में आई थी, अमेरिका में, यानी फिनिक्स में आई थी और वहाँ से अब ये जॉर्जिया में आई किसी दूसरे रिश्तेदार से मिलने के लिए और वहाँ से अब ये जो स्टोर में है यहाँ आ गई और यहाँ ये चोरी करी है और फिर ये पुलिस वालों कह रही है कि मेरे किसी रिश्तेदार को मत बताना, किसी को इसके बारे में पता न चले। यार इतनी शर्म आती है तो फिर चोरी क्यों कर रही थी तो? All right, ma'am, can you stand up for me? Huh? Can you stand up for me? Yeah, I can. Sir. All right, put your hands on your back. Yeah? Yes. No, please. Ma'am. Please. Ma'am. Please. Ma'am. Please. Ma'am, put your hands on your back. Please. Ma'am, put your hands on your back. Please. Ma'am, Please. do not resist me, because that is another No, charge. I'm not. the phone. Ma'am, listen to me. Listen to me. Yeah. Listen to me. We're gonna do this as smoothly as possible, okay? Because I don't want you to add an additional charge for no reason. No, okay. Just do understand, if you actively resist me, I No, I can't. How can can charge you. resist? So are you not gonna resist what I'm doing? Okay. All right. No. अब पुलिस वाले जब कार्रवाई करें ना तो ये कह रही है सर प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो। पुलिस वाला कह रहा है चुपचाप जो हम कहें वो कर लो और ये हमें हथकड़ी लगाने दो। यदि हथकड़ी नहीं लगाने दोगे, रेसिस्ट करोगे तो फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो भी लगा देंगे, 1-2 धारा और फालतू जुड़ जाएगी, नहीं तो चुपचाप रहो। Ma'am, turn around. Because you do it. This just a moment for that matter. Huh? I don't have anything to do with it, man. That's out of my hand. Sir, that's in your hand. That's in your hand. Please. Ma'am, Sir, please. I will never ever do. Please, sir. If you have a sister or mother, please. 133 check. I'm gonna have one to Please, pay. why you did this thing to me?
गजब यार गजब। पुलिस वाले कह रही है सर आपकी भी तो माँ बहन है, मुझे भी अपनी माँ बहन छोड़ के मुझे भी छोड़ दो, माँ बहन समझ लो मुझे भी अपनी। Please. Ma'am, nobody did anything to you. You're the one that came in this location, decided to do what you did. Huh? Please. 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 Wait, one second. 133 check on. Please. 133, go ahead. Please. Would you Please. clear my I line, asked thank you. Please. I don't want to let my son. Please. 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 What is name? 322. Sir, please have a mercy on me. Go, Again, Baba, I won't please. never ever do this. Have a mercy on me. Have a mercy on me. Have a mercy on me. Please have a mercy on me. Please have a mercy on me. Please have a mercy on me. I would never ever do this. Please have a mercy. Please, sir. I don't have Please. any control of it, man. Sir, please. Please. Ma'am, can you step over there, please? Please, sir. Ma'am, can you step over there? Sir, never ever do this. Ma'am, step over there. I'm like your Step sister, over like there. your mother. Step over there, please. I know. सर मुझ पर रहम करो, अपने माँ बहन समझकर मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर प्लीज। It's my first chance. I never ever do this. You can take everything. Please, I would never ever do this. I would. सर प्लीज मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। I'm saying this one. I'm trying to get you guys a case number. Please, please. How can I go to this? Please, sir. Sir. Ma'am, he done told you to stay over there if we get another चार्ज भी charge. लगा देंगे आपको। I'm being respectful, right? Yeah. Nice. Sir, please. Go Sir, find a please. home. Sir, I would never ever do this again. I would never in my life. Never. I would never ever do this, sir. Please. 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 Sir. In front of all. I should go in front of all. Please. Please. पुलिस वालों ने कहा चलो बाहर चलो, कह रही है सर ऐसे सबके सामने हथकड़ी में बाहर जाऊंगी मैं। Please. 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 Sir, penalty is so high. One promise you can give me. Don't tell Ma'am, my turn life. around. One promise you give me. Don't give my one promise. Sir. Sir. Ma'am, turn around. Sir, one promise. You won't tell anybody, okay? Oh, I'm not telling anybody. Huh? Not telling anybody. तो ये कह रही है सर किसी को बताना मत है मेरे रिश्तेदार को इस बारे में कि मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई हूँ। Okay, please, 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 No, you're not going in front. please. How can I do with this? Where can I run? Wait, hold on. Yeah, this is we don't wear. We Muslim. Ma'am, turn around, I'm please. Muslim. Don't do this, please. Ma'am, stop. हाँ. Just stop. This scarf, no. जब इसका ना दुपट्टा उतर गया था तो पुलिस वाली इसका दुपट्टा उतारने लगी तो कह रही है दुपट्टा मत उतारो मैं मुस्लिम हूँ। Oh, it hurts. It hurts. It hurts. It hurts. You're not supposed to be comfortable. That's very hurt me. I won't go anywhere. I won't go anywhere. Got any pockets on you? Just check and see if you have any pockets or property. That's it. No, I don't have. No, I don't have nothing. Okay, ma'am, have a seat for me, please. Sir, you did very wrong. Sir, you are a very nice person. पुलिस वाले को पानी मार रही है, मतलब कितना पानी मार रही है। सर आप वेरी नाइस पर्सन है, सर प्लीज मुझे छोड़ दो, जो चाहिए वो ले लो, सर प्लीज मुझे छोड़ दो। I appreciate it. Oh, I'm sorry, ma'am. One thing you just promise me. Yes. You don't let anybody know. Anything you can take from me. Okay? All right. Promise? Yep. अब ये पुलिस वालों को ना रिश्वत देने की कोशिश करी है, सर पेनल्टी ले लो, पैसे ले लो, कुछ ले लो, मेरे को छोड़ दो। आप कमेंट करो यार, क्या अमेरिका की पुलिस इसको लेके छोड़ देगी? और इंडिया में होता तो इसके साथ क्या होता? पुलिस वाले कितने के लेके इसको छोड़ देते? कमेंट्स करके बताना आप। Sir? Yes. Please? Sir? Yes, ma'am. Please?
Do you have any weapons in this bag or Come on, anything? oh my God. Do you How have can anything you're not supposed to have? I have- don't have. I'm just asking because I. No, not at all. I'm not that kind of. Okay. Nothing. Just I'm a traveler for my makeup and all stuff that. Nothing. Penalty, like money for me. Money? No, we won't take money. You're going to jail. Come on. No, you come on. Come on. Please, Today's not the day. Come on. please, Turn around for me. please. Just send me. Take a penalty. Turn around. Which court you will give me, please? Please. CPR, I mean, if she wants, she can go down with her wild girl money. Yeah, she can go down with her. Uniform 6087, Please? Bill White, Yukon. Turn around. Please. Sir. Ma'am, turn around. Sir, Ma'am, we had this conversation. All this pleas and begging, it's not going to do anything at this point. At this point, you're Sir. detained. We told you to read. You know exactly why. So it's not like it's for no I reason. don't know, You ma'am. do know. I don't know. You do know. I don't know. You made a mistake. You made a mistake, and now you know never to do it again, correct? Never. All right. So But that's it. please. My flight is today, please. Sorry, please, ma'am. Please. ये कह रही है कि मेरी फ्लाइट है आज है और प्लीज़ मुझे जाने दो, पेनल्टी ले लो, जो कुछ ले, मेरे को छोड़ दो आज। मतलब यार ये तो ये सोच रही थी कि मैं चोरी करके एक दिन पहले चोरी करके और जहाज़ में बैठ के और इंडिया भाग जाऊंगी और फिर पकड़ में नहीं आऊँगी। और मतलब ये इसका मतलब इसकी ये सोच थी कि भाई ये कह रही ना कि सर मेरी फ़्लाइट आज कि आप एकदम वहाँ जाओ, जहाज एकदम चोरी करके और सामान लेके और फुचक्कर हो जाए देश से, फिर कौन पकड़ेगा आपको? Just Ma'am. penalty. You can take a penalty. Penalty, just penalty. That's not how we Please. do that here. Don't take me, please. Don't take me, please. You promised me that you I won't did not let promise you anything. anybody else. You told me, please. Oh my God, you are hurting me. Hurting me. Turn around. Please, Turn ma'am, around. ma'am. Turn around. You can take penalty, please. Please, sir. Sir. Don't take this off I got because to we pat must you. no. Don't. I'm going to pat you down. I'll put it back on. No. Just my button is okay. Turn around. Put my scarf on me because we can never take out. Okay, that's fine. Yeah. Not like this Come on. in front of me. Come Can on. you do, please? इसका ना दुपट्टा जब नीचे उतरने लगा था, पुलिस वाले कह रहे सर दुपट्टा मत उतारो, मैं मुस्लिम हूँ, हमारे मुस्लिम धर्म में कि ऐसे सिर पर दुपट्टा रखते हैं। भैया मुस्लिम धर्म ये भी तो नहीं कहता तुम चोरी करो, कम से कम जो कुरान में लिखा हुआ उसका पालन ही कर लो। I'm going to walk back here. Please. Step up. Have a seat right here. Please. Sir. Sir. You don't have that much. All right, I'm going to get that citation out there. This is her wallet and her phone. I'll take the bag to drop it in. Okay. I know somebody else. कोई उनके फ़ोन पे घंटी बजी है, शायद उसके घर से कोई फ़ोन आया है। Ma'am, where have you been staying? You said you're When did you leave? Palpitation. I have a problem. when you planning to go back to India? Today I had a flight but that delayed. Inshallah tomorrow. अब ये गाड़ी में बैठा दी ना, अंदर गेट बंद कर दिया। अब ये कह रही है सर मुझे एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, परेशान हो रही हूँ मैं। फ्लाइट के बारे में पूछा तो कह रही है मेरी फ्लाइट डिले हो गई है और इंशाल्लाह शायद कल है मेरी फ्लाइट। अब Please, I have a palpitation on my heart. That's a problem. I swear. Okay, you're going to take deep breaths. Breathe in. Breathe out. You will be fine. Don't put your foot right there. Because I have to close the door. Huh? What is it? I'm listening. This is the problem. What's the problem? A heart palpitation. Okay, what about your heart? Angiosaid I take. Huh? Admit. ये कह रही है मेरी सांस लेने में परेशानी हो रही है, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, मेरा बीपी बढ़ रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं किसी डॉक्टर को बुलाएं आप उसकी मेडिकल हेल्प के लिए। ये कह रही है हाँ प्लीज़ बुला दो, मैं परेशान हो रही हूँ। Huh? My BP rises. Your blood pressure? Okay, you think you need Medications and inhaler.
Your medication, do you have it with you? No. No? So what are you asking? Angie sir. Huh? Angie sir. I can't hear you. Tablet Angie sir. Okay, what you want me to do? What do you need for me to do? What are you asking? Water. I don't have water. Water. I don't have water. You need AMR to come and check your blood pressure Yeah, blood pressure and my heartbeat. and your heartbeat? Yeah. Okay. I have a problem. Okay, I know you have a problem, but you asking for medical attention? Yeah. So that's what you need? Yeah. Okay. ये बोल रही है कि मैं तो मरने वाला हूँ, आई एम डाइंग, मैं मर रही हूँ। अब मेडिकल इमरजेंसी को पुलिस वाले ने बुलाया है और अब शायद कोई इमरजेंसी वाला आएगा, कोई डॉक्टर वॉक्टर, कोई नर्स, कोई ना कोई आएगी। तो मतलब पुलिस वाले कह रहे हैं कि लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले, हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी। Call it AMR, okay? Huh? He called it Yeah, AMR. AMR response to this location of Walmart. I live just about. Found a deaf female complaining of high blood pressure and heart pain. This is my last time. Hold on. ऐसा लग रहा है कि शायद ये बीपी के मरीज़ है, कहीं ना कहीं बीपी या हार्ट की मरीज़ तो ज़रूर है, ऐसा लग रहा है। I'm dying. Negative M outside 181. She's in the transport van, but she's requesting EMS. I'm dying. Right there. EMS en route, okay? Take deep breaths and breathe in and out. I'm dying. You're not dying. How long you been on blood pressure? How long you been taking blood pressure medicine? 2 years. 2 It's years? like, yeah. It's been 160. 416. ये कह रही है कि मैं मतलब बीपी की मरीज़ हूँ, 2 साल से बीपी की दवा भी खा रही है ये। My food. You say Inhaler. your inhaler? Your inhaler for what? Asthma or For my something? asthma. Do you have it with you in your purse? I'm not allowed. You don't carry your medication on you? I carry it, but You carry it, but not today. Yeah. इसको अस्थमा की भी समस्या है। फिर पुलिस वाले पूछ रहे एक तरह वो इनहेलर वो कहाँ है जो सांस लेते हैं वो दवाई वाला, तो बोली वो भी मेरे साथ नहीं, अभी पर्स यहाँ नहीं है, पर्स पे वो घर पे ही रखा है शायद इसका। That's something you should keep on you at all times, but you just never know. And then the heat is hot. Yeah. You just never know. Hopefully they'll have some water when they come. Golf Tango 955. Green Honda van. Usually Valley Road, Valley Circle. Turn the air up so you can have Golf air. Tango 955. What's the matter? You got to talk to me. Patient. What's wrong? Check my palpitation. I can't. I don't know what to check. So the AMR en route to check you, okay? Can you please? Huh? What are you I will asking? You never- have to talk. I What are will you never asking? do. I will never do this. You won't never do what? This thing, ever. What did you do? I didn't say I stole, somebody stole my dollars on airport. So that's why I don't have any dollars. This is Oh. remaining, you can take and penalty. I know I can't take your money. The law, if you take something that doesn't belong to you, Please, you either Please. get arrested or you please, go to jail. please don't do it. That's my job. I have to take you to jail. Please, Okay? please. Unless Please, please, AMR say anything differently. please, please. If you have a heart, Trust me, I have a heart. you don't have. I have a heart. First chance No, of first of all, punishment you're not gonna make me feel bad about what we're doing. If you put yourself in this position, you have to woman up and take this ride and go to the jail. I have a heart. You don't have. और ये पुलिस वाले को कह रही है कि तेरे पास दिल नहीं है, कम से कम कुछ तो दया कर ले, मेरे को छोड़ दे। पुलिस वाले कह रही है मेरे पास दिल है, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो अपना काम कर, चुपचाप बैठे। That's what you're not gonna tell me. Please. Okay? I will never. You don't have to beg and please me.
never do this. Okay, well you don't have to tell me. That's something you have to prove Just to yourself. Water. I don't have water. 31. I would pray for you. I don't need your prayer. I don't need I it. would pray. How about I pray for you? Please. I pray for you, okay? I am committing my sin. I'm committing. Well, I'm the wrong person to be Clear, 31. into. I'm committing it. Okay. 10-4, turn it back around. Please, sir. Sir. अब ये कह रही है कि मैं कमिट कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं मान रही हूँ कि मैंने गलती की है, मैंने चोरी की है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। Sir, take this home. I'm not feeling well. If you have a heart, if you have a heart, EMS en route. if you have a heart, sir, sir, can you take it off? Can you please, sir, madam, No, ma'am. please, sir. You are really brutal. I didn't do so much bad thing because somebody else my purse stolen. We didn't say you did anything. $3,000. Okay, but we didn't say you did anything bad. Did we say did you did anything bad? 61.16. Sir, please. Sir, you have a heart. You have a kids. You have a sister. Alright, your pocketbook? 141, 699. Pocketbook can't go down to the jail with you. What? Your pocketbook can't go down to the jail with you, so it's gonna be at our headquarters. I'll do the property release thing. What? Do the property release form. You have one of those? Yeah, I'm see about it. Okay. What? Yeah? What he saying? He'll write it on the paper for you. First time because somebody stolen my $3,000. You want to check if you should But if somebody stole your $3,000, Yeah. After take my purse, wallet. you know who did it? Yeah. Do you know who took it? Yeah. I don't know. You don't know? Yeah. Oh, okay. But if somebody takes something, you can't go 33 and on take Yeah. it. I'm out of Yeah. semester. This is the wrong way. Yeah. Just I was thinking that I couldn't shop that while, even my jewelry in that wallet. Don't take me to the jail. I'm very innocent. I'm very innocent. It's not up to me. It's up to you. I know. But one of friend. I'm just- She's my police. She's in police. She's my. अभी पुलिस वाले कह रही है कि मेरी एक दोस्त है और वो भी पुलिस में है, मैं पुलिस के बारे में सब जानती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, कुछ भी ले लो, मतलब ये कह रही है कि ले लो, बस कुछ भी ले लो। Very But I'm best not a friend. police officer. I'm a transport officer. I transport. He arrested you. They wanted to prosecute. So when they prosecute, he have no other choice but to arrest you. So it's not up to me. I It's can not up to apologize him. them. It's Sir, up to them. sir. You don't have to apologize. She just explained it to you. अब पुलिस वाले कह रही है ना, जो ये जो इसने गाड़ी में बिठाई, ये कह रही है कि भाई मैं तो ट्रांसपोर्ट से हूँ, मैं पुलिस वाले नहीं हूँ, पुलिस वाले तो वो उधर खड़े हैं, मेरा काम है कि तुझे यहाँ गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा दिया, मैं तेरे को थाने में छोड़ाऊंगी, बस इतना ही काम है मेरा। I'm here because I have to. Not because I want to lock you up or I want to take you back. First you learn by committing mistakes. Exactly. This is your And lawyer. I have my purse, $3,000 I lost and my jewelry too here in your country. So this is the first time. You can take from अब ये कह रही है कि मैं आपके देश में आया हूँ, मेरा भी $3,000 का जो पर्स है वो चोरी हो गया है आपके देश में। give it this scarf on my neck because I don't want it showing this one. Yeah. Thank you. Yeah. Thanks. पुलिस वाले ने इसको दुपट्टा उड़ा दिया, दुपट्टा उतर रहा था इसका। He'll do that for me. You can give me a ticket for that and take. Well, this gonna be your ticket too. How This your much? ticket. How much this? It's 500. Huh? 500. I have. पुलिस वाले कह रही है, तू जो ज़्यादा बोल रही है ना, ये बार बार कर रही है, $500 एक्स्ट्रा फाइन लग चुका है, तेरे को पेनल्टी लग चुकी है। No, we can't take your money. Huh. No, 500. no. So this one I would give. You have to go to the Dunwoody Police Department There I have to pay. if you want to get out. You have to pay. Don't do this. Please say him. Take this money.
We don't want your money. We can't take your money. And even my jewelry. No, Diamond ring. No, ma'am. Please, no. You know that's another charge. You know that could be another charge. डायमंड रिंग ले लो, पैसे ले लो, जितने मेरे पर्स में पैसे सारे ले लो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। रिश्वत देने की कोशिश करिए, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि मुझे तेरे पैसे क्या करना है, जो रूल है, जो कानून है, नियम है, उसके हिसाब से तेरे ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। Thanks for listening. You're welcome. I don't deserve this. I don't deserve this. Well, that's the law. Please, I don't know the law. Now I came to know the law. 34 was doorbell with You the, don't know with the the law? suspect, I because I don't know because I never did this thing to. I understand that, but you know not to. Please, 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 They were looking for the vehicle as well. please. One Life Fitness. Turn all the way around. There you go. I'm gonna take these cuffs off. I'm gonna take one off, okay? Don't do anything stupid, okay? How can I do Okay. anything? How can I do I just want to make sure. How can I do anything? You know very well. How can I do anything? Blood pressure is 148/79. Step out, step out, step out. Come on. I ain't got time for all that now. You're not listening, you're not following directions. I'm listening to you. Whatever you say me. Walk, walk. What? Where? I'm so tired. My leg is so sore. You didn't listen me even. You're like me. Have some soft corner. अब ये गाड़ी से उतार दी ना, ये कह रही है कि कुछ तो मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है दिल में, थोड़ा हाँ तो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दो कि मैं इतनी बार प्लीज़ प्लीज़ कर रही हूँ और प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो करिए हाँ ठीक है, अपना सॉफ्ट कॉर्नर अपने पास रखे, जो एक्शन है वो जो लीगली कार्रवाई वो पूरी होगी। I have to go there and pay. You don't, somebody else will have to. Nobody is here to pay for my. Well, since no one is here, you will sit for 3 days. Here, 3 days. So if I have a money, so they can give How you gonna get the money? in my. Well, somebody will have to come up here and get your money. You know somebody? Yeah. You have a friend? No one is here. No one is. Well, I told who you, keeping your baby? My friend. So I don't want to let Who her watching know. your baby? My friend, my Well, cousin and my if you want to friend. get out, somebody gonna have to know something. No, If please, not, you're gonna sit here for 3 days. please don't do this. Don't do. I don't have no control over this. I'm paying my money. I have a money. I told you. I have money. So you can pay on my behalf in the. No, ma'am. अभी जो पैसे देने की बात करी थी ना, पुलिस वाले कह रही है कि पैसे तेरे से नहीं लेंगे, अब जो तेरी जमानत करवाने आएगा, जो तेरे को छुड़वाने आएगा, पैसे वो सबमिट करेगा। तो फिर कह रही कि मेरा तो कोई है नहीं, तो नहीं है तो ये कह रही कि 3 दिन फिर तुझे यहीं रहना पड़ेगा, 3 दिन के बाद छोड़ेंगे। मतलब ऐसा कोई नियम है, कोई दूसरा आएगा वो उसकी मतलब हर्जाना भरेगा, जो जमानत भरेगा मे भी, और फिर वो उसको मतलब वो छुड़वा के ले जाएगा। और ये नहीं कोई आता है तो फिर 3 दिन इसको यहीं रखेंगे थाने में, अन्यथा सिर्फ 1 दिन रखे फिर दूसरा कोई भी छुड़वा के ले जा सकता है इसको थाने से। I promise you. I just say him that I'm with my friend. I just tell them. You gonna I'm tell with your my friend? Yeah, I just You said. won't lose your friend. Huh? You say you'll lose your friend? No, no. I just tell my son that he's. How not old is your very- son? 10. 10 years old. Yes. Who's taking care of your 10-year-old son? My cousin. So who is your friend? My cousin. I thought you she's my said your friend. And my friend and my cousin. She's my friend, like my friend. And my second cousin. And you know they are the relative. Who is they, this? They are. This is my elder son. He's in Phoenix. You know that son, if they know. Put your password in here. They would never owe me. Password. No? Okay. Password. Password. Yes. If I Here. Put it on here. Don't call them. Don't call them. Okay. Don't just that. No, you're going to sit in here for 3 days.
You gonna sit? Just money. Huh? Off the phone. Off it. Off it. Okay. अब ये कह रही है कि मैं तो किसी रिश्तेदार को बुला ही नहीं सकती, रिश्तेदार को पता लगेगा तो बेइज्जती होगी। यार इतनी बेइज्जती से डर था, फिर चोरी क्यों करी थी? मतलब यार कुल मिला के ये है कि ये महिला मुंबई से है और वहाँ पहले फिनिक्स में गई है, फिनिक्स के बाद किसी दूसरे रिश्तेदार से मिलने जॉर्जिया में चली गई, जॉर्जिया में फिर ये वहाँ एक स्टोर में गई है, स्टोर से इसने कपड़े हैं और वहाँ ये कुछ सामान है, सेंट वेंट है, पेंट है, वो गुस्सी है, वो इसने चुराया है और बगैर बिल दिए और बिलिंग के बाहर निकलने लगी तो इसको पकड़ लिया। और अब ये मतलब कहीं भी बीमार होने का बहाना बना रही है, कभी कह रही है मेरी सेहत ख़राब है, कभी कह रही है मेरी कल फ्लाइट है, मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो ये सारी हरकत है। भैया आप अमेरिका में हो, चाहे किसी भी तरह के अमेरिका में हो, स्टडी वीज़ा पे हो, वर्क वीज़ा पे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे हो, वहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप ये मत सोचना कि इतना बड़ा है मुझे कोई नहीं देख रहा। तीसरी आँख तो देख रही है। आप जगह जगह बोर्ड लगे हुए नहीं देखते, आप तीसरी आँख की निगरानी में हैं भैया, उस तीसरी आँख की निगरानी में है। और जब आप अमेरिका ही चले गए, आप 4-5 लाख रुपए पहले अकेले अपने लिए निकाल के तभी गए हो ना कि 1.5 लाख की खर्च आने का, 1.5 लाख टिकट का जाने का, वहाँ भी 1 लाख 2 लाख खर्च हो जाएंगे, तभी तो आप अमेरिका इतना प्लान करके गए हो। और फिर वहाँ जाके अरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चुरा रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो यार। मतलब इतना दिखावा करने की जरूरत क्या है? जब पैसे नहीं तो कम दिखावा कर लो। अमेरिका जाना जरूरी था, दुबई में चले जाते, सारे 50-60 हज़ार में घूम के आ जाते। तो अमेरिका जा रहे हो तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? क्यों देश का नाम बदनाम कर रहे हो? तो इस वीडियो पर आप कमेंट्स करो इस महिला की हरकतों पर, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।